Hello viewers, I'm Taran Kumar Goonwal, Assistant Professor in St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon. The following video is prepared as per the syllabus and course outline of Maharshi Dayanand University. However, there are mostly general topics which cover the working and theoretical aspects of civil engineering. For best understanding and conceptualizing clearly, please do not skip the video and watch till end. At the end of each topic and each section, we will be discussing about the related important questions, feasibility and application. Let's start the video. Hello students, hello everyone. Welcome back to the channel. In today's session, we're going to start with a new unit, which is columns. And this is contained in the subject Design of Concrete Structures first, which is in 4th semester of Civil Engineering in Maharishi Dayanand University. So we'll start with the topic now. Introduction. Compression members are structural elements primarily subjected to axial compressive forces, and hence their design is guided by considerations of strength and buckling. तो ये जो structural member हैं, ये compression को withstand करते हैं axial compressive forces को, और इसीलिए उनकी जो डिजाइन है वो उनकी स्ट्रेंथ और बकलिंग पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइनिंग की जाती है. Next, we will discuss about effective length. It is the vertical distance between the points of inflection of the compression member, which is in the buckled configuration in a plane, and this is termed as effective length and denoted by LE of that compression member in that plane. The effective length is different from the unsupported length L of member, though it depends on the unsupported length and type of end restraints. The relation between the effective and unsupported lengths of any compression member is given by LE is equals to KL. So, effective length निकालने के लिए formula where K is the ratio of effective to the unsupported length. तो K ratio है effective to unsupported length का ratio है K. Clause 25.2 of IS 456 stipulates the effective lengths of compression members in annexure E of 456 IS. This parameter is needed in classifying and designing the compression members. तो 456 में जितने भी compression, जितने भी types के columns हैं, जिस भी तरीके की उनकी supports conditions हैं, उसके basis पे effective length दी हुई है. Next is pedestal. So pedestal is a vertical compression member whose effective length LE does not exceed 3 times of its least horizontal dimension, that is B. तो इस जो pedestal होता है उसकी effective length, ये भी एक vertical compression member है जिसकी effective length उसका जो least horizontal, जो horizontal direction में dimension है से B, उससे exceed at least 3 times से ज्यादा exceed नहीं करेगा. The other horizontal dimension D shall not exceed 4 times of B. और जो total depth है, it should not exceed 4 times the breadth. Column. A column is a vertical compression member whose unsupported length L shall not exceed 60 times of B, which is least lateral dimension, if restrained at two ends. तो कॉलम में जो L की वैल्यू है वो 60 times B, 60 B से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. Further, its unsupported length of a cantilever column shall not exceed 100 B square upon D, where D is the larger lateral dimension, which is also restricted up to 4 times of B, and this is as per clause 25.3 of IS 456. Next is wall. So wall is also a vertical compression member whose effective height HWE to thickness, that is T, least lateral dimension, it shall not exceed 30. It is as per clause 32.2.3 of IS 456. The larger horizontal dimension, that is the length of the wall L, is more than 4T. So classification of columns based on the type of reinforcement used.
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार्स को होल्ड करने के लिए टाइज दी हुई है स्पेसिंग पे. सो दिस इज अ टाइड कॉलम. ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनल बार है अगर स्फेरिकल कॉलम है, तो इसमें इसको होल्ड करने के लिए ऐसे ये हेलिकल रीइंफोर्समेंट दी हुई है, और ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है पिच कहलाता है. ये एक कॉम्पोजिट कॉलम है जिसमें एक स्टील सेक्शन दिया हुआ है. देन दिस इज कॉम्पोजिट कॉलम ऑफ स्टील पाइप. ये अंदर और ये कंक्रीट और ये बीच में स्टील पाइप है. सो based on types of reinforcement, the reinforced columns are classified into three groups. First, as we discussed, is tied column. The main longitudinal reinforcement bars are enclosed within closely spaced lateral ties. जैसा कि फिगर में देखा. Next is columns with helical reinforcement. The main longitudinal reinforcement bars are enclosed within closely spaced and continuously wound spiral reinforcement. Circular and octagonal columns are mostly of this type. तो circular और octagonal column types में हम helical reinforcement का use करते हैं. Next is composite columns. Main longitudinal reinforcement of composite columns consist of structural steel sections or pipes with or without longitudinal bars, जो कि फिगर 3.1c और 3.1d में ऊपर हमने देखा है. Out of the three types of columns, the tied columns are mostly common with different shapes of the cross section, that is square, rectangular, etc. तो जो टाइड कॉलम्स है सबसे कॉमनली यूज्ड है और उसमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप दोनों तरीके से दी जा सकती है. हेलिकली बाउंड कॉलम्स आर आल्सो यूज्ड फॉर सर्कुलर और ऑक्टागोनल शेप्स ऑफ क्रॉस सेक्शंस. नाउ दीस आर कॉलम्स बेस्ड ऑन लोडिंग्स. दिस इज एक्सियल कॉलम, concentric, and this is axial loading with uniaxial bending. ये so this is, and this one is, see, this one is axial loading which is concentric. This is axial loading with uniaxial bending, you can see, and this is axial loading with biaxial bending. See, it is acting at a distance e. So columns are classified into three types. Columns subjected to axial loads only, that is concentric loads, as shown in figure above. Columns subjected to combined axial load and uniaxial bending, and third is columns subjected to combined axial load and biaxial bending. Next is classification of columns, which is based on slenderness ratio. So columns are classified into following two types based on slenderness ratio, which is short columns, and second is slender or also long columns. These are the mode of failures of column. It is effective L by D ratio, and this is the rate of intensity of the external load applied. So lesser the L by D value and with higher rate of external load, you can see the failure chance mechanism, the failure chances are higher, and as the L by D ratio increases, the modes of failure, the chances of failure decrease. So we will discuss in detail now about this figure. So this figure presents the three modes of failure of column with different slenderness ratios when loaded axially. तो तीन केसेस दिए हुए हैं. एक एक्चुअली लोडेड कॉलम है जिसके स्लेंडरनेस रेशियोस गिवन है. इन मोड 1, ये वाला जो केस है, कॉलम डज नॉट अंडरगो एनी लेटरल डिफॉर्मेशन एंड कोलैप्सेस ड्यू टू मटेरियल फेलियर. तो इस केस में जो कॉलम है वो उसमें कोई भी लेटरल डिफॉर्मेशन नहीं होता और ना ही कोई कोलैप्स है मटेरियल फेलियर की वजह से. एंड दिस इज नोन एज कंप्रेशन फेलियर. Due to combined effects of axial load and moment, a short column may have material failure of mode 2. अगर axial load है और साथ ही moment है
मोमेंट भी जनरेट हो रहा है एक्शियल लोड की वजह से, तो जो शॉर्ट कॉलम है वो मोमेंट मोड 2 में फेलियर हो जाएगा उसका। On the other hand, a slender column subjected to axial load only undergoes deflection due to beam column effect and may have material failure under the combined action of direct load and bending moment. और जैसा कि मोड 3 में है, जब एक लॉन्ग कॉलम होगा तो अगर उस पे एक्शियल लोड्स आएंगे तो बीम कॉलम इफेक्ट जनरेट होगा और जिससे डिफ्लेक्शन होगी, जिसकी वजह से मटेरियल फेल होगा डायरेक्ट लोड में और बेंडिंग मोमेंट की वजह से। तो इसमें डिफ्लेक्शन या फिर किसी भी मोमेंट की वजह से फेलियर नहीं होगा। Such failure is called combined compression and bending failure of mode 2. तो इस केस में ही इसको combined compression और bending failure बोला जाता है mode 2 में। And mode 3 failure is by elastic instability of very long column even under small load much before the material reaches the yield stress. Mode 3 में जो फेलियर है वो इलास्टिक इंस्टेबिलिटी की वजह से होती है। अगर कॉलम बहुत ही ज्यादा लंबा है तो उस केस में एक कम अमाउंट का लोड भी मटेरियल को डैमेज कर सकता है, इससे पहले कि मटेरियल यील्ड स्ट्रेस पर पहुंचे उससे भी पहले डैमेज कर सकता है। एंड दिस टाइप ऑफ फेलियर इज नोन एज इलास्टिक बकलिंग। द स्लेंडरनेस रेशियो of steel column is the ratio of its effective length, that is LE, to its least radius of gyration R. तो slenderness ratio है effective length और least radius of gyration का ratio. In case of reinforced concrete column, however, IS 456 stipulates the slenderness ratio as the ratio of its effective length LE to its least lateral dimension. IS 456 कहता है कि slenderness ratio है effective length और least lateral dimension का ratio. As mentioned earlier in section 3.1a, the effective length LE is different from unsupported length. तो ये ध्यान में रखना है कि effective length unsupported length से अलग है. The rectangular reinforced concrete column of cross-sectional dimension B and D shall have two effective lengths in two directions of B and D. Accordingly, the column may have the possibility of buckling depending upon two values of slenderness ratio as given below. तो अगर मेजर एक्सिस की हम बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए, तो L इफेक्टिव लेंथ इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय D एंड स्लेंडरनेस रेशियो अबाउट माइनर एक्सिस इज इफेक्टिव लेंथ इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय B. So based on above discussion, clause 25.1.2 of IS 456 stipulates the following. A compression member may be considered as short, that is ये short column की condition है, when both the slenderness ratios LEX upon D and LEY upon B are less than 12, where LEX is effective length in respect of the major axis, D is depth in respect of the major axis, LEY is effective length in respect of minor axis, and B is width of the member. It shall otherwise be considered as slender compression member. अगर ये दोनों रेशियोज 12 से कम आते हैं तो शॉर्ट कॉलम, और अगर 12 से ऊपर आते हैं तो स्लेंडर या फिर लॉन्ग कॉलम. Further, it is essential to avoid the mode 3 type of failure of column so that all the columns should have material failures, mode 1 and 2 only. और ये भी जरूरी है जानना कि मोड 3 का फेलियर अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मोड 1 और 2 टाइप का फेलियर हो. Accordingly, clause 25.3.1 of IS 456 stipulates the maximum unsupported length between two restraints of a column to 60 times its least lateral dimension. For cantilever columns, when one end of the column is unrestrained, the unsupported length is restricted to 100 B square upon D, where B and D are as defined earlier in this case. This is B and this is B. Now we have conditions for longitudinal reinforcement. The longitudinal reinforcing bars carry the compressive loads along with the
कंक्रीट। तो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बार है, उनका प्राइमरी फंक्शन है टू कैरी कंप्रेसिव लोड्स। Clause 26.5.3.1 stipulates the guidelines regarding the minimum and maximum amount, number of bars, minimum dia of bars, spacing of bars, etc. And following are the salient points. So 26.5.3.1 में IS 456 के clause में minimum maximum amount of reinforcement, number of bars, minimum dia of bars, spacing of bars सबके बारे में information दी हुई है। उसके बारे में थोड़े से कुछ और salient features हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। The minimum amount of steel should be at least 0.8% of the gross cross-sectional area of column required. If for any reason the provided area is more than the required area, तो minimum amount of steel वो 0.8% होगी gross, जितना भी gross cross-sectional area है column का, उससे कम नहीं होगी। The maximum amount of steel should be 4% of the gross cross-sectional area of the column so that it does not exceed 6% when bars from column below have to be lapped with those in the column under consideration. तो जो maximum amount of steel है वो 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4% gross cross-sectional area का, ताकि ये 6% से exceed ना कर पाए जब हम नीचे वाले कॉलम को उसके ऊपर वाले कॉलम के साथ लैपिंग करेंगे। इसीलिए अगर जब नीचे और जब लोअर कॉलम और अपर कॉलम की जब लैपिंग होगी तो उस केस में जो रीइंफोर्समेंट वहां पे 6% हो जाता है वो भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। 4 and 6 are the minimum number of longitudinal bars in rectangular and circular columns respectively. तो रेक्टेंगुलर कॉलम में मिनिमम 4 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स डलेंगे और सर्कुलर कॉलम में मिनिमम 6 number of longitudinal bars डालेंगे। The diameter of the longitudinal bars should be at least 12 mm. जो longitudinal bar है कॉलम में कम से कम 12 mm का सरिया होना चाहिए। Columns having helical reinforcement shall have at least 6 longitudinal bars within and in contact with the helical reinforcement. और helical reinforcement जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सर्कुलर या फिर octagonal columns के लिए, वहाँ पे at least 6 longitudinal bars helical reinforcement के कांटेक्ट में होने चाहिए। The bars shall be placed equidistant around its inner circumference. और bars को बराबर दूरी पर रखना है circumference के along अंदर से। The bars shall be spaced not exceeding 300 mm along the periphery of the column. The amount of reinforcement for pedestal shall be at least 0.15% of the cross-sectional area provided. Now we'll talk about transverse reinforcement. Transverse reinforcing bars are provided in forms of circular rings, polygonal links, that is known as lateral ties, with internal angles not exceeding 135 degree, or helical reinforcement. The transverse reinforcing bars are provided to ensure that every longitudinal bar nearest to the compression face has effective lateral support against buckling. तो जो ट्रांसवर्स रीइंफोर्सिंग बार्स होती हैं वो इसलिए प्रोवाइड की जाती हैं ताकि जो लॉन्गिट्यूडनल बार है ये उसको रिस्ट्रेन करके रख सके और कंप्रेशन के केस में उसमें सपोर्ट रहे और बकलिंग ना हो। Clause 26.5.3.2 stipulates the guidelines of the arrangement of transverse reinforcement and transverse reinforcement के salient points कुछ इस तरीके से। This is a lateral tie, first type of arrangement. These are the main bars, longitudinal bars, and these are ties, as you can see. So first condition is transverse reinforcement shall only go round corners and alternate bars if the longitudinal bars are not spaced more than 75 mm on either side. तो ट्रांसफर reinforcement जो है वो कॉर्नर से ही होते हुए निकलेंगे, बिल्कुल कॉर्नर पे राउंड में जाएंगे, और ऑल्टरनेट बार्स पे अगर लॉन्गिट्यूडनल बार अगर 75 mm से ज्यादा डिस्टेंस पे स्पेस्ड है। नेक्स्ट इज, as you can see, lateral tie arrangement number 2. So you can pause in the video and also you can draw these diagrams so that you can understand it better. Longitudinal bars spaced at a maximum distance of 48 times the dia of the tie shall be tied by single tie
and additional open ties for in between longitudinal bars. तो जो longitudinal bars हैं जो कि 48 times dia of tie के डिस्टेंस पे हैं, ये उसका मैक्सिमम है, इतने अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं उनको एक सिंगल टाई से ही बांधना होगा और एडिशनल ओपन टाई दिए जाएंगे जो भी बीच में लॉन्गिट्यूडनल बार्स होंगे. एंड दिस इज लेटरल टाई अरेंजमेंट नंबर 3. ये भी आप देख सकते हैं, ये मेन बार्स हैं और इनको किस तरीके से टाई अप किया गया है. फॉर लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्लेस्ड इन मोर देन वन रो, transverse reinforcement is provided for the outermost row in accordance with above, and no bar in inner row is closer to the nearest compression face than 3 times the dia of the largest bar in inner row. And this is arrangement 4 of lateral tie. ये इंडिविजुअल ऐसे बार्स हैं तो उसको इस तरीके से कन्फाइन किया हुआ टाइज से. For longitudinal bars arranged in a group such that they are not in contact and each group is adequately tied as per A, B or C, this one, as appropriate, the transverse reinforcement for the compression member as a whole may be provided, assuming that each group is a single longitudinal bar for determining the pitch and diameter of the transverse reinforcement. तो इसको individually grouping करके transverse reinforcement से tie कर दिया जाता है. The diameter of such transverse reinforcement should not, however, exceed 20 mm. तो इस केस में जो transverse reinforcement है इनका डाया 20 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए. Now we'll talk about pitch and diameter of lateral ties. So first is pitch. The maximum pitch of transverse reinforcement shall be the least of the following. तो जो maximum pitch की value है transverse reinforcement की वो इन दोनों में से कुछ होना चाहिए. The least lateral dimension of the compression member, या तो lateral dimension compression member का उसकी जो भी least lateral dimension होगा वो, या फिर 16 times the smallest dia of the longitudinal reinforcement bar to be tied. तो जो भी smallest longitudinal bar है उसके डाया का 16 times या फिर 300 mm. And diameter, the diameter of the polygonal link or lateral ties shall not be less than 1/4 of the dia of largest longitudinal bar and in no case less than 6 mm. 6 से कम कभी भी नहीं होगा और 1/4 of the dia of the largest longitudinal bar nominally डिजाइन किया जाएगा. So as discussed in limit state, we will again discuss the overview of assumptions used in design of compression member by limit state of collapse. So the following are the assumptions addition given in 38.1 for flexure or design of compression members as per clause 39.1 of ISO 6. तो ये कुछ constraints हैं जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं. The maximum compressive strain in concrete in axial compression is taken as 0.002. तो जो maximum compressive strain है concrete में एक्शियल कंप्रेशन के केस में उसकी वैल्यू रहेगी 0.002. द मैक्सिमम और सेकंड पॉइंट, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन एट हाईली कंप्रेस्ड extreme fiber in concrete subjected to axial compression in bending and when there is no tension on the section shall be 0.0035 minus 0.75 times the strain at least compressed extreme fiber. तो जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन है एक हाईली कंप्रेस्ड फाइबर के केस में जिसको जो कि एक्शियल कंप्रेशन और बेंडिंग अंडर वो कर रहा है और जिसमें कोई अभी तक टेंशन नहीं है, तो उसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन के उस केस में 0.0035 माइनस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन इन द लीस्ट कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर, जो वैल्यू होगी वो इसमें हम यूज करेंगे. So this was all with today's session. In the next lecture, we will discuss about eccentricity and do a few numericals on columns. Till then, have a great time. Keep studying. Thank you. I hope you guys could understand and correlate the topics taught in today's session.
If there is any query or subject matter issue, feel free to mail me at the given email ID. Live discussion sessions could also be used for discussion of doubts. Thank you.